Good morning students. Today we are going to learn about divisibility test by 9, 10, 11, 12, 15 and 25. Students, in previous content we have already learned divisibility test till 8. So let us start divisibility test by 9. A number is divisible by 9 if the sum of its digits is divisible by 9. Students, the divisibility test by 9 is same as the divisibility test of 3. So let us understand it with the help of one example, and here I have taken number 765 and the sum of the digit is 7 plus 6 plus 5 is equal to 18. And we know that 18 is a multiple of 9. Therefore, 765 is divisible by 9. Let us take one more number. Here I have taken number 1095 and the sum of the digit is 1 plus 0 plus 9 plus 5 is equal to 15. And see student, 15 is not a multiple of 9. Therefore, 1095 is not divisible by 9. Next, divisibility test by 10. All those numbers which have 0 in the ones place can be divided exactly by 10. ऐसे सभी नंबर्स जिसके वंस प्लेस की डिजिट 0 होगी वो सारे ही नंबर्स जो होंगे वो 10 से डिविजिबल होते हैं. सो लेट अस टेक वन एग्जांपल एंड हियर आई हैव टेकन नंबर 5160 and the ones place digit is 0. Therefore, 5160 is divisible by 10. Take one more example and here I have taken 99,999 and here ones place digit is not 0. Therefore, this number is not divisible by 10. And next is divisibility test by 11. The difference of the sum of the digits at even place and that of the digit at the odd place must be divisible by 11. So student, to check the divisibility test by 11, हम इवन प्लेसेस एंड ऑड प्लेसेस की डिजिट को ऐड करके दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करेंगे और अगर वह डिफरेंस 11 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वह नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा. सो लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. सो हियर आई हैव टेकन. सो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि आपको इवन और ऑड नंबर को ऐड नहीं करना है. यहाँ पर आपको इवन प्लेसेस एंड ऑड प्लेसेस की डिजिट को ऐड करना है. तो फर्स्ट प्लेस है वो ऑड है, सेकेंड प्लेस इवन, इसके बाद थर्ड प्लेस ऑड प्लेस, फोर्थ प्लेस इवन, इसके बाद फिफ्थ प्लेस भी ऑड प्लेस होगी. तो यहाँ पे ऑड प्लेस डिजिट का सम करेंगे. सो हियर वी राइट सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस. तो यहाँ पे ऑड प्लेस की डिजिट क्या है? 9 प्लस 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 23. अब हम इवन प्लेस की डिजिट का सम करेंगे. सो हियर वी राइट सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस. सो इवन प्लेस की डिजिट क्या है? 0 प्लस 1. सिर्फ 2 ही डिजिट है तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1. अब हम दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे. सो हियर वी राइट डिफरेंस 23 माइनस 1 इज इक्वल टू 22. So student, here you can see 22 is divisible by 11. Therefore, we can say 61,809 is divisible by 11. Now let us take one more example. And here I have taken number 5081. So firstly we write the places. First place is odd, second place is even, third place is odd and fourth place is. So here we find the sum of digits at odd places and that is 1 plus 0 is equal to 1. Then we find the sum of digits at even places. And here the digit which is at even places is 8 plus 5 is equal to 13. Students, अब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे. 13 minus 1 is equal to 12 and we know that 12 is not a multiple of 11. Therefore, we can say 5081 is not divisible by 11. Next, we check the divisibility test by 12. The number must be divisible by both 3 and 4. Means ऐसा नंबर जो 3 से और 4 से दोनों से ही डिविजिबल होगा वो नंबर 12 से भी divisible होगा. So let us understand it with the help of one example. Here
I have taken number 3192. So student, as you already know the divisibility rule of 3 and 4, so 3 की divisibility check करने के लिए हम पहले digit का sum करेंगे. So here we write sum of digits is equal to 3 plus 1 plus 9 plus 2 is equal to 15, and we know that 15 is divisible by 3. Now let us check the same number by 4, and 4 की divisibility को check करने के लिए हम last की 2 digit को 4 से divide करते हैं, और अगर यह 4 से exactly divisible है तो इसका मतलब वह number भी 4 से divisible होगा. So let us divide 92 by 4, and the answer is 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, and the number 3192 is divisible by 4 also. यह number जो है 3192 3 से भी exactly divisible है और 4 से भी. Therefore we can say 3192 is divisible by 12. Now see the divisibility test by 15. The number must be divisible by 3 and 5. So let us understand with the help of example, and here I have taken number 1095. So to check the divisibility by 3, we find the sum of digit, and the sum of the digit is 1 plus 0 plus 9 plus 5 is equal to 15, and we know that 15 is the multiple of 3. So 1095 is divisible by 3. Now let us check it by 5. So in 1095 the ones place digit is 5, and we know that जिस नंबर की वंस की प्लेस की डिजिट 5 और 0 होती है वो सारे ही नंबर जो होते हैं वो 5 से डिविजिबल होते हैं. इट मींस 1095 इज डिविजिबल बाय 5. अब जब यह नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है, therefore 1095 is also divisible by 15. Now let us see the divisibility test by 25. The number formed by the last two digits must be 25, 50, 75 और 00. ऐसा नंबर जिसके लास्ट की 2 डिजिट 25, 50, 75 और 00 है, वो सारी डिजिट जो होती है वो 25 से divisible होती है. So let us take some examples, and the number is 15,625, and here you can see last 2 digit is 25. Therefore we can say 15,625 is divisible by second example, and the number is 3,150, and say student last 2 digit is 50. So 3,150 is divisible by 25. Take third example, 6,175, and last 2 digit is 75. Therefore 6,175 is divisible by 25. Take one more example, and here I have taken 90,572, and say student last 2 digit is 72. It means 90,575 is not divisible by 25. So student, now it's practice time. Here I have given some questions for your practice. Please do it, and we'll meet in next video. Till then, thank you. Bye bye.